Parmesh, can we go? Yes, come on. Good evening, everyone. We are live on YouTube. The links have been shared to many people. And welcome to this special edition coffee program in conversation with two legends of Bangalore. The intro is very big, but I would give you very shortly because we have to see what so many insights, questions we have, how the success have been reached, how difficultly the 40 years of journey of Neelkanth Jewellers have been through. Let's go take the insights. Before that, I would heartily welcome Narinder Singh ji with big round of applause. Narinder Singh ji, sir, thank you so much for joining today on the special program. My dear friend, Ram sir, welcome to this evening, a special program. So before starting, we would request to felicitate and honor them. Rakesh. Yes, sir. Thank you. Thank you, Narendra Singh, sir, and Ram, sir, for joining this special program. Thank you so much. So, नरेंद्र सिंह जी ऑलरेडी आई कॉल्ड एक्चुअली अंकल, तो मैं नाम तो आपको बोल नहीं पाऊंगा बार बार. अंकल, नीलकंठ ज्वेलर्स गोल्ड एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउ डिड दिस नेम it have come, how did it arrive, and what is the story about this Neelkanth name? First of all, namaste to all presents here. थोड़ा पास में. हाँ. First of all, very, very good evening. Namaskar to all the presents here, the big wigs of the industry. And thank you very much. They had thought के हम इसके काबिल हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, हार्टफेल्ट थैंक्स. और ये जो नीलकंठ एक्चुअली शिव जी भगवान का नाम है. और हमारी वाणी में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ये नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, प्रभ तो पैलाज हमारी. मतलब नीलकंठ नर हर नारायण, नीलकंठ वो जो भगवान है वो सब मनुष्य में, ऑल ह्यूमंस में एक जैसा ही है. और वही हमारी लाज रखता है, वही हमारी इज्जत रखता है, और वही हमारे को जीने की ताकत देता है. तो ये नीलकंठ नाम जो है एक हिंदी में भी है शिवजी भगवान का, और हमारी गुरुमुखी पंजाबी में ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आया है. तो ये हमें अच्छा लगा, प्यारा लगा, और हमारे दिल के करीब लगा. तो हमने ये नाम ऐसे ही सहज स्वभाव ही रख लिया. क्या बात है अंकल, जो आपकी वाणी में मिठास है, कहीं ना कहीं हमें भी वो भगवान के करीब लाने का याद दिलाती है. अंकल, हम ये जानना चाहेंगे कि नीलकंठ को 40 साल पूरे होने को आए इस साल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, नीलकंठ पूरे परिवार को. लेकिन अंकल, ये जानना चाहते हैं कि ये
पहले आप होलसेल में थे, फिर आप रिटेल में आए, तो ये आपकी हिस्ट्री कहाँ से, ये थोड़ी सी हम आपकी पिताजी की और दादाजी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि आप पहले से ज्वेलर थे, पिताजी गोल्ड में थे, तो थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे हम अंकल इसके बारे में। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आप बता रहे हैं कि हम 40 इयर्स पुराने, नो सॉरी, ये आवर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 1950। 1950 से आज तक एक ही काम किया और एक ही काम सीखा और एक ही काम ड्रीम किया और एक ही काम है, वो है ज्वेलरी बिजनेस। माय फादर, he came in partition. We are from Amritsar, Punjab border. One corner of India, Amritsar, the other corner of India is Kanyakumari. So Amritsar to Kanyakumari, my father came from Pakistan as a refugee. There they were landlord, but when they came to Amritsar as a refugee, he was not having a single paisa in hand. We sat in camps, we sat in gurdwaras, ate langar and survived for 6 months, 1 year here and there. And then in allotment we got one very small house, my father, and he started living there, got married. I was born in 1949. And since my childhood, I remember helping my father, going to school in the morning, afternoon, whenever free, I used to join my father work and helping him in his work. He started goldsmith work and he was a nose pin manufacturer. And we were having a very, very meager income, a very, very, what you call, just to survive. But my father was a very hard-working man, ambitious man, and भगवान पे भरोसा करने वाले आदमी और मेहनत में विश्वास रखते थे। और उन्होंने मेहनत की, अपने काम को बढ़ाया और हम तीनों भाई, मैं और मेरे दोनों छोटो भाई भी उनको साथ साथ सपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चर में सपोर्ट करते थे। फिर धीरे धीरे हमने नोज़ पिन से छोटी आइटम, रिंग्स, पेंडेंट्स, बालीज वगैरह बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने होलसेल धीरे धीरे शुरू किया अपने अमृतसर गुरु बाज़ार में, और गुरु बाज़ार से शुरू करके पहले हमने पंजाब के छोटे छोटे ज्वेलर्स को सप्लाई करना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम यूपी में गए, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते शुरू से हालांकि काम था, we were having good work, but my father was always a dreamer, ambitious man, and we moved to Bihar, and from Bihar we went to West Bengal and started business in Calcutta. I remember when Morarji introduced Gold Control Act. It was in 1961 or 1962, and that was a bomb, atom bomb on the jewelry industry. Everybody thought 14 karat, sorry, cannot make, and they moved to other businesses. Many from gold business families, they moved to other businesses, but my father did not. He said, no, we will, this is not a, हमारे ऊपर कोई वो blow. We will use this opportunity, and he made 14 karat jewelry in Amritsar. I remember 1962, and he made a lot of around 300 grams 14 karat jewelry, and he went to the collector, central excise collector in our Amritsar head office and produced the jewelry. They were so happy because everyone in all over India were saying 14 karat, oh, not possible. And those days machinery and this
manufacturing techniques were very minimum. So 14 carats jewelry making, it was a miracle. So he arranged one press conference in Amritsar and announced, see, one jeweler of Amritsar, he has produced 14 carat jewelry, and it came in the newspaper. And that 14 carat jewelry we manufactured in Amritsar and started in wholesale in UP, Bihar, and then we moved to West Bengal, Calcutta, and we got a very good boom in Calcutta. And then when Gold Control Act stopped in, I think, 1968 or 1970, I don't remember exactly, that time we moved into 22 carat, and then we started making lightweight jewelry in Amritsar and Jadau jewelry in Amritsar, which was very famous, and that workmanship was available only in Amritsar. So that manufactured jewelry we started, supplied in Calcutta also, and then we moved to South, started from Andhra, Tamil Nadu, Kerala. Kerala we got a boom, very, very big boom. There was a Gulf money supply and Gulf money flow, and the jewelers of all the Kerala jewelers, big wigs, all are my friends, Joy, Bhima, Alukas, Joy. We were supplying in big quantities to them, and then later on we thought carrying jewelry from Amritsar to South. I remember the days, 30 hours, 40 hours train journey, taking ornaments in hand. That was very difficult. So we thought, why not open an office in Chennai? So we opened an office in Chennai in 1978. And from Chennai we started serving 4 states: Andhra, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. 1978 to 1984 we were in Chennai, all the 2 brothers, and my father and my younger brother was at Amritsar. So then in 1984 जब भी हम बेंगलोर आते थे, बेंगलोर का मौसम बड़ा अच्छा लगता था, क्लाइमेट बड़ा अच्छा लगता था, और वाव, मन में एक अरमान उठता था, एक ड्रीम उठता था कि कभी ऐसा कुछ भगवान करे कि हम बेंगलोर में सेटल हो जाएं. तो भगवान ने कहा आ जाओ. तो हम 84 में, आई रिमेंबर, 2nd फ्लोर एवेन्यू रोड में हमने एक छोटा सा ऑफिस खोला. छोटा सा ऑफिस खोल के वहाँ से हमने पूरे बेंगलोर को सप्लाई करते थे, पूरे कर्नाटका में करते थे, मैसूर, तुमकुर, हसन, शिमोगा, सब जगह जाते थे, उडुपी. सारे मेरे यार हैं. आप अगर पूछो ना मेरे को, तो सच में अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री में वो होलसेल बिजनेस के कारण सब मेरे यार हैं. ये जितने आज के बिग विग्स हैं, सबके साथ मैंने बांट के थाली में खाना खाया हुआ है. एक थाली में खाना खाया हुआ है. एक जो है, इतनी इज्जत शुरू से, पता नहीं क्या बात है, पिताजी ने एक बात सिखाई थी, बेटा पैसा कितना कमाया नहीं बताना, ये बताना कि इज्जत कितनी कमाई. क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए सर के लिए. क्या बात. एक शुरू से मन में एक भावना जो थी ना, एक मन में जो डीप वो थी कि यही कि इज्जत जो है, और मेहनत तो हम शुरू से गॉड गिफ्ट था, मिला हमें पिताजी से मेहनत करने का. माय फादर डाइड एट द एज ऑफ 88, एंड ओनली 1 week बिफोर ही डिसकंटिन्यूड हिज डे टू डे प्रैक्टिस, कमिंग टू द ऑफिस. सो दैट स्पिरिट आल्सो आई प्रे टू गॉड कि वो मेरे भी टुडे आई एम 76 एंड आई गिव 10 hours 11 hours डेली ड्यूटी. आई लव माई वर्क, I enjoy my work, and I want to penetrate the deepest possible, if possible. So that is our story. भगवान ने इज्जत रखी है. हम ना 3 में हैं ना 13 में हैं, बहुत बड़े बड़े हैं इधर बैठे हुए, और उनसे बहुत कुछ सीखना है हमको.
लेकिन एक बात है कि भगवान ने जो है ना इज्जत दी है, एक रिस्पेक्ट दी है। आप जैसे बड़े बड़े लोग हमें स्टेज पे बुला के ये मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अंकल अभी पिक्चर बाकी है, आप ही रखें। अंकल आपने ये जो आपकी जर्नी है, पापा से लेकर आप इतने साल इस इंडस्ट्री में रहे, और जब आप बात करते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो सच्चाई है, वो दर्द नहीं, वो दुख से नहीं, वो प्यार से जब बाहर आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंकल अभी बिजनेस में राम सर आ गए हैं, और पहले जब आप इनिशियल स्टेज में जब रिटेल करते थे तो राम सर का आपके साथ कैसा कनेक्ट है, और कितने साल से वो आपके साथ बिजनेस में आने लगे? Same thing happened as I did with my father. He also started coming to the shop, Avenue Road, I remember. आता था इसको, मैं जब इसको आइसक्रीम भी खाने को मिलती थी और मसाला डोसा भी मिलता था, लेकिन साथ साथ शुरू से ही इसको जो है 10 साल, 12 साल, 14 साल से ही started assisting me in my day-to-day business. And साथ साथ इसने अपनी ग्रेजुएशन भी किया, और लेकिन साथ साथ बिजनेस में भी मेरा पूरा साथ दिया। तो शुरू से जैसे ये मेरे ब्लड में है, ऐसे यही बिजनेस उसके ब्लड में भी है। एंड ही इज़ एजुकेटेड, ग्रेजुएट, मॉडर्न मैन, एंड ही नोज, ही गोज बहुत से अपने ज्वेलरी फ्रेंड्स से, हमारी सारी फैमिली ज्वेलरी बिजनेस में है, माय यंगर ब्रदर एंड उससे सबसे छोटा। वी हैव 1 स्टोर इन हैदराबाद, 1 इन पुणे, 3 शोरूम्स इन चेन्नई, ऑल ब्रदर्स। मेरे पिताजी ने बोला था, एक ही शहर में 3 भाई क्या करोगे, इंडिया बहुत बड़ा है, वाई नॉट बी स्कैटर्ड। तुम बेंगलोर, एक भाई को चेन्नई दे दो, और एक हैदराबाद जाओ, और एक पुणे जाओ। एंड ऐसी गॉड्स ग्रेस के ऑल आर इक्वली गुड, नॉट ओनली के बेंगलोर नीलकंठ इज गुड, नीलकंठ हैदराबाद भी सेम उतनी ही भगवान की कृपा से रेपुटेशन है। और पूना में तो कमाल ही हो गया है, पूना वाले जो है, महाराष्ट्र वाले, पूरे बॉम्बे में पूरी उनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है। सबसे बड़ी बात, मैं काम बहुत ज़्यादा है उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ट्रेड वाले सारे प्यार करते हैं। सो ये सब सीख के, आप लोगों से ही सीख के, माय सन राम अडॉप्टेड, ही वाज एम्बिशियस फ्रॉम द डे 1। आई वाज वेरी हैप्पी इन एवेन्यू रोड, बट ही टोल्ड नो नो, now it is time to move out. Avenue Road became very busy, so we shifted to Richmond Road, and from Richmond Road the next जो था वो हमने रिचमंड रोड में ही फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, आज पूरा बिल्डिंग हमारे पास है। और उसके बाद ही वॉज वेरी विजनरी, वेरी एम्बिशियस, तो ही ओपनड इन HSR, in HRBR, and we are managing it very successfully, and he knows definitely more better, and nowadays he is the boss, and I am big sir. He is boss. So, and he is discharging his duty to the best possible. I am proud of him, and I pray God to give him more strength and more success in life. Thank you, Uncle. I would request now Ram sir. You know, that was very interesting when I went to meet Uncle and Ram sir and told sir I want to know about your history and what all things you do, because we all want to understand. The Neelkanth brand, they have been very quiet. They don't come in more public. They stay very humble.
तो अंकल ने क्या बताया मेरे को कि चेतन मेरी तारीफ ज़्यादा मत करना। मैं एक ही हूँ कि हमको, जब मैं उनसे 2 घंटा बात कर रहा था, 2 घंटा में 30 बार उन्होंने बोला कि हमने कुछ कमाया नहीं कमाया, इज्जत कमाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कार है उनके पिताजी के या उनके फैमिली में, इनमें ये बात बहुत हमें पता चलती है कि ये हम्बल, पैसा आना और बड़ा ब्रांड बनाना, उसके साथ एक हम्बलनेस होना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आपको हम्बल रहोगे तो आपको प्यार और इज्जत दोनों मिलेगी। राम सर, कमिंग टू यू, मैंने सुना है कि पापा आने के बाद आप ऑफिस आते हैं, तो ये क्या राज है? आपसे पहले पापा पहुंच जाते हैं फिर आप पहुंचते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। इनको जाना चाहिए, let him go. He said I am the boss but he's the chairman. So sir, sir, on a lighter note, this is Ram sir. I think father figure and industry, full industry loves him, and the way he carry his aura, and the way he love people, and people loves him. Do you think it's difficult to match to his vibe, or it's difficult to run how he runs? Do you feel sometime it's difficult, or you get motivated, or what exactly happens when you see him? Because at the age of God grace 76 now, and when he talks you can see the passion what is there in him for the business, for the love. So it's difficult to match him sometime, or what exactly you feel? It is very much difficult to match. So the kind of zeal and the enthusiasm that he has for work, and so yes, he is a people's man basically. So let it be the staff, let it be customers, let it be even the vendors. So he has a special place in their hearts. So yes, it is difficult. At times we try also, and that's the reason why that he goes to office before me. That's, okay. yeah. So yes, it's he has that passion within him. So, but as much as I can, I try. So what made you, because Papa was in wholesale, Grandpa was into gold business. Then you moved from wholesale to retail, and you were in Avenue Road. What made you to tell Dad that now it's a time to go out and grow in a bigger way? What was your thought process when you wanted this Neelkanth to come out of the city area? So basically, we had retail and wholesale side by side for quite some time. But there came a time when I joined in the year 1997. So there came a time where the capital was limited with whatever we had. So, but since it was our wholesale also was counter based, we never went to people to sell. So people used to come to our counter and buy. So there was a time when all the wholesale, since we had a bigger store from a 600 store to a 600 square feet store to a 3,000 square feet store at Richmond Road, there would be a clash between wholesale buyers and the retail customers. So the preference was given to wholesalers because fine, that's where we see quantum, and retail customers would then feel, because on the same counter we have a retailer sitting, and retail customer sitting, and a wholesaler sitting. So customer would always want to see what he is kept in his basket, right? And then we would say, no, we can't give this to you. Then the wholesaler would fight with us, no, I want this. So that became an issue. So that's when we thought that it's time to now stop wholesale completely and then concentrate only on retail, because customers also liked the jewelry. Customers also were giving us the confidence that yes, now we should shift and concentrate only on retail. Okay. So when you came to retail, we had one flagship store in Richmond Circle. Am I right? And Dad is very clear. तेरे पास जो है उसी में तेरे को करना. He don't like to take. He take risk, but I think he take a calculative risk. He's very clear about. I hope I'm right on this thing. Absolutely. He's a very calculative risk, and
ही टेल्स जो भी है साल में बढ़ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए. लेकिन to convince him to open the second and third store, was it tough? Was it challenging? Or how did you do that? And what made you to open the second and third store? No, it was not tough. It was not that we had to convince each other for that. We were game, but yes, we only wanted to make sure that our systems are in place, and it should not be a wrong decision that we open and then manage. So we wanted to learn how to manage and then open branches. So once when we thought that, okay, fine, now we are capable of handling it, so we went ahead and we opened the branch. In fact, it was late. I mean, this took us quite some time, but yeah, finally it happened. So there was no convincing us. We were all on the same page. Okay. So Ram sir, a lot of people when I meet them, Dad is very expressive. You're not very much expressive. You talk to the point, and sorry, maybe I am wrong because I observe you very closely. When we speak to Dad, he expresses the love also, anger also, everything. But when we come to you, you're less expressive. So this, like, I want to know how is it like you are less expressive, or to the people it depends on that. How is it? Yeah, it depends on that. It's tol mol ke bol. Acha, tol mol ke bolte. Even Dad also says that. Okay. Ram sir, now, first we would like to congratulate that Dadaji also, he became abhi pote ki shaadi ho gayi. Even your son has got married. Son is sitting right here. A big round of applause. Recently he got married. Now it's a fourth generation, but in this business, third generation, right? Fourth generation. This fourth generation. When I spoke to him in one individual cabin and I told, can you just tell what thing you want to tell Papa that you need to change? And I was amazed to hear that line. Really, Sumesh bhai, I want to tell you from this heart, why I was expressing this, because the family values is most important. He told one line, he's the world's best dad, and what bonding we have each other. What I want, he knows very well, and when he is in stress or pain, by seeing him, I can understand. The great bonding he has with the father. Usually I asked him, do you want anything that to change one thing? He told, no, I don't want anything to be changed in the dad. So that shows the true family values. Apart from that, sir, what makes Neelkanth Jewellers one of the prominent brand of our Bangalore? For you, Neelkanth means what? What you stand for? And what is one thing you want to tell this? Because of this, my brand is brand. What core values you keep as a brand? The most important point is that we don't look, we are not for numbers. We don't want 30, 40 walk-ins every day. But whatever we get, we just want that, and we concentrate, we focus on that, that is customer satisfaction. So getting crowd is not important, but when you are not able to manage the crowd, it doesn't make sense. So it has taken a lot of time, many years to build the brand in this way. And I think that is the only reason why we delayed our expansion also. And even now it is the same. So any customer who comes, I don't want any customer to feel that he's been neglected or whatever it is. So that's the most important thing, customer satisfaction. But one USP of Neelkanth Jewellers, which you feel many jewellers have, but this is with Neelkanth Jewellers, one USP that you feel. No hardcore selling. Okay. Big round of applause. There is no hardcore selling. Customer is satisfied, will buy. Okay. So it's a very great thing you have kept. अंकल, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने राम सर की तो अच्छी बात सब बताई
कि राम सर का बचपन आपके साथ गुजरा और उन्होंने बहुत किया, एक चीज़ जो आपको लगता है राम सर के साथ कि आपको चेंज करनी है, आपको लगता है 100% कहीं ना कहीं पिताजी बच्चों से कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक ही चीज़, कि कभी भी आपको लगता है कि राम के अंदर ये चीज़ को चेंज होनी चाहिए, या आप उनको हर बार इस चीज़ के लिए टोकते, क्या चीज़ है वो और क्यों? Very good question. Very good question. I believe that he should be at full liberty to take independent decisions. I also believe that he is young and more what you call visionary according to the modern times, and risk in everything. If I prevent him, don't do this, don't do that, it means I want to avoid risk. No, I always give him full freedom to take decisions, maybe with little risk also, so that if कुछ गलत होगा भी तो he will learn in the future. I don't believe in the principle that elders should say do this and don't do this. I don't believe. I believe in his what you call wisdom and want to give him a free hand so that he can visualize, he can materialize whatever dreams he has for his future. I don't want to say, oh, don't do this, it is risky. No. I will better say, okay, go ahead. अंकल क्या चेंज करना ये, या क्या चेंज क्या करना चाहते हैं? ये तो चलो आपने बता दिया फ्री हैंड करेंगे, लेकिन आप एक जो कोई चीज है जो राम सर के अंदर चेंज होनी चाहिए. Yes. Let's to the point. Very good question. He is a very soft-hearted person, which I observe sometimes it is not good. He should be practical, but he is more what you call soft-hearted, kind. Emotional. Huh? Emotional. Yes, emotional, very right word, emotional. So which I feel that he should not do, but he do. Let it be, I don't mind. You know, Sumesh bhai, uncle, thank you. They told me not to share, but I will just share as an influence, uncle, with your permission. There's some incident taken place in business. Uncle, I'm sharing this, it's an inside story, but to motivate others, there is nothing personal. Ram sir have given some guarantee for XYZ that you give the products. If he don't give, I will give it, like guarantee when we give, like reference. Like Sumesh bhai, you do the work, he will pay you. This is a very, when I heard this, really I have not seen a person like that, and I've never heard also this. This is something miracle for me also. So when I was sitting with uncle told me, Chetan, XYZ took a product from XYZ, reference given by Ram sir. Knowingly, unknowingly, he became defaulter and banker. Amount was huge, XYZ. As the guarantee was given by Ram sir, he went to dad. He told him, we need to pay this amount to XYZ because I have given the word. Dad told, no, you can't do it. Dad is practical. Then he threatened to dad, if you do this, I will not come to business and go anywhere. Dad was understood that he gave a word. It was more amazing that whatever the due amount was there,
paid by Neelkanth Jewellers, Ram sir and uncle. That is called a word. That was the word was somebody else. Somebody else took the product, but somebody else gave the word. That word have been fulfilled by a person who given a word that I am the reference. That shows that how much they are when it comes to the values and the word. Uncle was telling from a lot of lines we can hear out that he was telling that important is respect, respect, respect. So I told uncle, it is not your mistake, it's your blood. So it will be the same. So big round of applause for Ram sir and uncle that this is a very, Anand Babu sir, it's very difficult to find this. Even we can't do it. We would change immediately. Hey, I told that day, now I can't give. Okay, coming to that, thank you so much. Ram sir, now the fourth generation your son is into business. He just got married. What do you think about him and will he take the business to the next level? Or what you taught him that this is the basic things, whether business happens or doesn't happen, you have to be careful about this. What 3 mantras, what dad gave you, that I want to know first. Then what you have passed on to your son. 3 things. The first and most important thing is, when youngsters join a family business, it's not easy, right? So you need to have a lot of patience. So the first things first is, I tell him that you need to keep a lot of patience. Okay, things cannot happen overnight. It will take time. And to be available at all times to your team or the customers. So that is what the first thing I have told him. And I think our industry is facing this challenge that youngsters are not opting to join the family business, especially the jewelry business. Maybe because of the challenges that we have in the industry, but I think that is all in the minds. So I'm glad that he had no option, but yes, so I'm glad that he joined. So I think, yes, definitely he has that and he has seen how we have worked. So he can take it forward. I'm pretty sure about it. So now we are just saying he have joined the business. Do you advise him one thing that you have advised him so many things, but do you want him to change for one thing, anything, one change you need to see in him? Not one. Many? Whatever that he can change for the good is accepted. So it's not that one. So because if you're limited to only one, that means you just want him to change that one thing, right? No. So whatever is good for the family and for the growth of the company is most welcome. Ram sir, you're very straightforward. Your nature is very straightforward. So because of that, sometimes even your family says that you need to be little diplomatic. But your nature is very straightforward. So would you adopt to be diplomatic in the future? Are you going through that transmission of adopting the diplomacy? Because I genuinely feel that when you're straightforward, when you convey, everyone have a different thought process. So you're adopting this transmission? I don't think so I can be diplomatic. Being very frank. Being straightforward is good. There's no harm in it. Yes, sir. That is okay, but Yeah. sometimes you ever face this issue that you were straightforward and... Yeah, there are pros and cons of being straightforward, but it's okay. I don't Your think I nature can is that. change. Yeah. And how about dad? Dad, it's in his name, so he can handle, he can be diplomatic. Okay, he and can he be can handle diplomatic. things, At a time. the situation accordingly he can manage. Yeah. One thing what
now dad have seen a life journey. One thing you want a dad to change. Maybe it's possible or not, but because you're seeing from so many years, what one thing you want dad to change? The change is not possible now, but it's his nature that, as I told you also, I discussed this, that delegating work to others, because he has built the brand, so he has done it all on his own. So, and right from what do you say, things, to attending to customers himself, showing the product himself, to even purchasing, to even to the extent of accounts and everything done one man show. So it's become a routine for him. So that is the only thing, but there's no harm. He keeps himself occupied and But busy. you request him to delegate, right? So that he can, it is like you want him to be free. That's the thing. There is no other agenda in that. Like he want to be mentally stress free. Yeah, I want him, but he cannot. So He can't happen. It can't happen. It's there in and his- he's also very clear. yeah. So let's leave this He's point happy now. with it. Yeah, it's leave this point. Now this is very interesting, uncle. 25 years back, Jewels of India started. You were being the, as if I'm right, you were being the first exhibitor. And I think Mr. Sandeep Bhai is here. The question is for you only now, so that if you can, when we have Q&A, it will be easy. So, uncle, ये इसके बारे में कुछ 25 साल पुरानी जो कुछ बात आपको याद है, ये कैसे ये शो पैदा हुआ और ये चला, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अंकल? फर्स्ट एग्जिबिटर आप थे. हाँ जी, I remember the day. It was somewhere in 1987 or 88? 1999. 1997, yes. I remember. And in those days, when we shifted to Bangalore in 1984, there was a jewelers culture, lunchtime closed. Evening, 7 o'clock, in CKC shop, bell was ringing. It is 7:30 and we will be closing within 15 minutes. I had seen the days. Lunchtime, strictly 2:30 to 4 o'clock, 4:30, the shops were closed. Acha. And then jewelers were unimaginable. Oh, is it possible taking the jewelry from shop to the exhibition? And in the Bangalore, when we are in Bangalore, what is the use of exhibition when we have a store here? But Sandeep came, I have an idea. I said, it is a very good idea. It is very good. I will support. And you take my booking first. And he booked my name, Neelkanth Jewelers. And seeing our name, oh, Neelkanth is participating. Many other jewelers also, okay, we will also come, we will also come, we will also come. Till today, Sandeep sir always says, you are my first exhibition booker, stall booker, and he is very thankful to me, and I am thankful to him. And I remember that days Jewels of India was fully, first show was also very successful. And after that, many shows, it were jam-packed. I do a big salute to him. Sandeep sir, I think you want to say. Yes, please you can come on stage because it's live. So I would give you 2 minutes to tell about this. हेलो सो सर जो भी आपने बोला वो 100 आने सच बोला. आप मेरे को खुशी है कि आपको याद है 25 साल पहले की भी क्या इमोशंस थे. तो जो बात आपने बोली वो एकदम सही बोली. वो ये बोली कि उस समय एग्जीबिशंस के बारे में भी आपको भी नहीं मालूम, एग्जीबिशंस के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं था. तो जब हम कह रहे हैं कि ज्वेलरी शो करना चाहते हैं तो यहाँ के दुकानदार बोलते थे यार करने की क्या जरूरत है, हमारा शोरूम तो पास में ही है, एग्जीबिशन की क्या जरूरत. ही वॉज द ओनली मैन हु एनकरेज्ड मी. तो ये 100% सच है. उस समय ज्वेलर का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है ना. तो who will take the first bait? And somebody reputed like him,
ही टुक मी, ही सॉ द वेन्यू, पहला कॉफी भी इन्होंने ही पिलाया, पहला चेक भी इन्होंने ही दिया। तो वहां से जर्नी हमारी शुरू हुई है। 1 लाख रुपए का चेक उस समय बहुत मान्य रखता था 1998 में। पहला चेक भी इन्होंने दिया, एंकरेज भी खुद ही किया, एंड देयर आर सो मेनी अदर गुड थिंग्स ही डिड। पहले शो में ही वाज सो फुल फ्लेज विद अस कि पार्वतम्मा राजकुमार तक पहुंचने की हमारे पास तो ताकत नहीं थी, तो ये खुद ले गए मुझे। इनके कहने से वो मैडम जो शी वाज पार्वतम्मा राजकुमार इज लाइक अमिताभ बच्चन वाइफ, हाउ वी से, तो वो आई इनॉग्रेशन के लिए, मेनली अगेन थैंक्स टू हिम, एंड द शो वाज सक्सेसफुल। सो आई थिंक द सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स विद यू सर, एंड वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैं दुकानें कम जाता था क्योंकि मेरी मार्केटिंग टीम थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत मेहनत की। तो जब मैं इनके दुकान जाता था, आई एम अ हार्डकोर मार्केटिंग गाय। एग्जीबिशन तो बाद में आया तो मैं एफएमसीजी कंपनी में काम कर चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि जो इन्होंने किया मेरे लिए, व्हेन आई वेंट टू देयर स्टोर, इनको भी याद नहीं होगा, कैश काउंटर के पीछे आई वेंट जस्ट लाइक अ कस्टमर विद सम ऑफ माई, इनके कैश काउंटर के पीछे लिखा होता था प्राउड पार्टिसिपेंट ऑफ ज्वेल्स ऑफ इंडिया। तो मेरे जैसे मार्केटिंग आदमी के लिए मेरे कस्टमर अगर ये लिख रहे हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ सो मच प्राइड फॉर मी। तो मैं ये सब चीजें कभी नहीं भूलूंगा सर, मेरे मरते दम तक मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। थैंक यू संदीप भाई, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। राम सर, ये जो संस्कार है ना पापा के, दादाजी के, यही हमको बताते कि हम कैसे, तो हम नहीं पूरा जग कहता है कि नीलकंठ परिवार के क्या संस्कार है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, पूरे परिवार को, कि ऐसे प्रभु ने आपके अंदर खून में वो संस्कार दिए कि लोगों का इससे भला हो, मेरा भी हो, दूसरों का भी भला हो, ये विश्वास के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। राम सर, आपको गाने का बहुत शौक है, आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है, और कभी कभी आप फ्री बैठते हैं तो अच्छा गाते हैं। तो हम सब 2 लाइन आपसे, पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि हमके 3-4 गाने तो आपके बहुत फेवरेट है, वो भी हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हम भी आपसे सुनना चाहेंगे। क्योंकि और ये पैशन आपको कहाँ से जगा है गाने का? कहाँ से आपको ये गाने का, आपको मोहब्बत है गाने से? सिंस चाइल्डहुड ओनली। तो आपको लगा कि आपने सीखा है कुछ म्यूजिक, कि ऐसे ही गुनगुनाते हुए सीख गए? सीखा भी है। हाँ, तो सर 2 लाइन हमारे लिए हो जाए, कोई 2 लाइन हो जाए सर। सबके लिए यूट्यूब में है, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कोई गाना गाते हैं तो वो उससे प्यार करते हैं, वो गाने से मोहब्बत है हमको, वो लफ्ज़ से मोहब्बत है। तो 2 लाइन हम चाहेंगे आपकी आवाज़ में आप गुनगुनाएं। और उसमें मुझे लगता है आपको, नहीं कोई सिचुएशन नहीं है, पापा भी चाहते हैं, अंकल आप नहीं चाहते कि 2 लाइन ये गुनगुनाए? अगर आप मना कर दे तो मैं नहीं गुनवाऊंगा। 2 लाइन गुनगुनाए आप, कोई 2 लाइन आपकी फेवरेट गुनगुनाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। क्या बात है सर, आपकी तो सुर, ताल, आवाज बहुत बढ़िया सर आपने गाया। थैंक यू। राम सर, वैसे खाने के वैसे आप कितने शौकीन है मुझे नहीं पता है। दिख नहीं रहा क्या? वो खाने से नहीं है, खाना तो आप बहुत लिमिटेड खाते हैं, लेकिन खाने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप कन्नड़ा भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, बहुत क्लियर बोल लेते हैं आप, मैंने सुना है आपको। खाने में आपको बहुत ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? साउथ इंडियन। साउथ इंडियन? इडली डोसा। इडली डोसा। और पनीर की सब्जी का क्या, पनीर की सब्जी नहीं पसंद है आपको? नॉट मच। या तो नहीं, या तो फिर सिमरन भाभी ने मुझे गलत बता दिया होगा फिर। तो इडली डोसा पसंद है आपको। अंकल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपने बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन जब भी आपको कुछ वक्त मिलता, फ्री वक्त थोड़ा बहुत अपने लिए, तो उस वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, आज भी और पहले भी? वेरी गुड क्वेश्चन।
बचपन से काम के साथ साथ किताब पढ़ने की चेटक लग गई थी। आई वॉज ए बुक वॉर्म और रीडिंग का बहुत शौक़ था, और इतना शौक़ था कि ये मेरा जो स्पेक्स है ये भी उसी का गिफ्ट है। सारी देर रात तक कुछ भी नहीं छोड़ता था, नॉवेल्स, स्टोरी, हिस्ट्री, फिक्शन, एनीथिंग, ऑटोबायोग्राफी। और उसने जो है मेरा व्हाट यू कॉल इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत इम्प्रूव किया। मुझे सारी दुनिया से दोस्ती हुई, दुनिया का अच्छा लिटरेचर मैंने इंग्लैंड, फ्रांसिस राइटर्स, विक्टर ह्यूगो, मैक्सिम गॉर्की, किस का नाम लूँ, ऑल द वर्ल्ड फेमस राइटर्स की बुक्स मेरे पास हैं। और मेरा एक ही शौक़ है बुक रीडिंग, और उसके बाद मेरा दूसरा शौक़ है वॉकिंग। मेरे पास जब भी मेरे को टाइम मिला तो मैं या तो वॉकिंग करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ। टीवी का मुझे शौक़ नहीं है। रात को एवरी डे 10:30 to 12, 10:30 to 11:30, 11:45 2 बुक, एक बुक मेरे बेड की साइड में पड़ी रहती हैं। मैं बैठ के पढ़ता हूँ और किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाता हूँ, और अपने जो रोज़ की मेंटली टेंशन होती है, जो का डे टू डे स्ट्रेस होती है, वो मेरी सारी किधर गायब हो जाती है मुझे पता नहीं पड़ता। और बुक रीडिंग एंड वॉकिंग दे आर माई हॉबी। अपने एक्स्ट्रा टाइम में वही करता हूँ। अपनी लाइफ में आई एम ए वेरी सिंपल मैन, वेजिटेरियन मैन, टी टोटलर मैन। क्लब्स में, पार्टीज़ में कहीं नहीं जाते नहीं हैं। टोटली स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं और टी टोटलर हैं। और अपना काम, और उसके बाद अपना परिवार, और उसके बाद समाज, सोशल सर्कल, उसमें आते जाते हैं। प्यार से लोग बुलाते हैं, हम भी उनको बुलाते हैं। आई एम हैप्पी, कंटेंटेड इन माई लाइफ। और मेरा शौक़ एक ही है, बुक पढ़ना, और मॉर्निंग, इवनिंग, व्हेन एवर टाइम मिल जाए वॉक करना। ये गॉड का गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। अंकल, आपकी जो बात होती है बहुत सीधी और बहुत स्ट्रेट पॉइंट पे होती है। एक बुक जो आपके जीवन को बहुत इंस्पायर करती है और आप सबको कहते हो कि ये बुक पढ़नी चाहिए, ऐसी कोई बुक जो आपको लगता है आपके लाइफ में आपने इतनी किताबें पढ़ी लेकिन उस बुक से आपका लाइफ चेंजिंग का ऐसा कुछ आगे माहौल बना, वो बुक आप के बारे में बताना चाहेंगे? There are so many books. I particularly एक बुक का नाम लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बट आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड एंड स्टिल रशियन राइटर्स मैक्सिम गॉर्की ने एक नावल लिखा था मदर। वो मेरे को बहुत इंस्पायर किया है इमोशनली। और मैंने देखा कि कितनी हार्डशिप्स के बावजूद भी लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, और एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं सोचता था कि मैं ही बहुत काम करता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहता हूँ, या मेरे पिताजी मेरे को हर टाइम गुस्सा करते रहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं ज़्यादा काम कर, ये कर, वो कर। लेकिन वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यस, मेरे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है। और अगर वो अपनी ज़िंदगी में इतनी हार्डशिप्स के बावजूद कामयाब हो सकते हैं, लाइफ को हंसते हंसते जी सकते हैं, तो वाई नॉट आई। थैंक यू अंकल। एक जीवन में सबके दुख सुख सब आते हैं। आपका एक कठिन दौर जो आपको याद है कि एक कठिन कोई ऐसा दौर जिसमें आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई कठिन दिन, कठिन वारदात या कठिन कोई दौर, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमको?
कठिन दिन होता है ना अंकल के जिंदगी में ऐसा एक दिन आता है जो बहुत दुख होता है, या ऐसा एक दौर आता है वहाँ हम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, फिर आपने अपने आप को संभाला। ऐसा कोई दिन, ऐसे की वारदात आपके साथ हुई हो जो आपको याद है? ऐसा पर्टिकुलरली कुछ याद नहीं है, बस लाइफ डे टू डे चैलेंजेस, हार्डशिप्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं समय के साथ साथ। ऐसा पर्टिकुलरली आई कांट से एनीथिंग। ऐसा पर्टिकुलर, लेकिन एक अच्छा सुख का दिन कोई ऐसा आपके लिए बहुत हैप्पी मोमेंट आपके लाइफ का, वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी मोमेंट? सुख का मोमेंट है, सुख का मोमेंट है। सुख का मोमेंट ये है कि कहते हैं कि इंसान को अगर उसकी ज़िंदगी में एक पूरा गुरु मिल जाए, एक एनलाइटेंड पर्सन मिल जाए, एक उसके दर्शन हो जाएं, और ऐसा गॉड गिफ्टेड सोल हो कोई जिसने खुद परमात्मा को अनुभव किया हो, देखा हो, महसूस किया हो, तो उसकी संगत में, उसकी सोसाइटी में, उसके पास बैठ के वही फीलिंग आपको होती है। तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे सुखद अनुभव है मेरे को अपने गुरु से मिलना, गुरु का साथ मिलना। और हम पहले गोल्डस्मिथ थे तो मीट खाते थे, नॉन वेज खाते थे। माय फादर रोज़ नॉन वेज खाते थे, ड्रिंक भी करते थे। लेकिन वो एक गुरु, एक पीर, एक पैगंबर, एक एनलाइटेंड सोल हमें मिली जिसने हमारी ज़िंदगी का कांटा चेंज कर दिया। गाड़ी मुगल सराय थे जानी सी हावड़ा और चली गई किसी दूसरी तरफ, बॉम्बे की तरफ। तो वो कांटा जो चेंज हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखद अनुभव है कि मैं उससे छूट गया और अच्छी संस्कार मेरे को मिले और मैं अच्छी सोसाइटी में आया। वो संगत में, गुरु की सोसाइटी में, अपनी संगत में आया और मेरा जीवन बदल गया और मेरी ज़िंदगी की धारा बदल गई और मेरे को अंदर से व्हाट यू कॉल ठंड, अंदर से वो एक पीस ऑफ माइंड मिला जिससे मेरी ज़िंदगी जीने की ताकत बढ़ी। वो कौन से गुरुजी हैं? वो गुरुजी संत हरनाम सिंह जी थे जो मुझे मिले 1968 1970 में मुझे मिले। और उसके बाद हमने खाना पीना छोड़ा, दारू छोड़ी, शराब छोड़ी, नॉन वेज छोड़ा। और उसके बाद फिर वो गुरुजी के आगे जो चलता है, गुरुजी के आगे गुरु हैं और दूसरे जिन्होंने टेक ओवर किया। फिर आज भी वो गुरुजी हमारे हैं और हम साल का 1 महीना 20 दिन 25 दिन उनकी संगत में जाते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं और क्या बोलते हैं कि काम के साथ साथ वो जो अंदर की जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू अंकल। लास्ट आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। आज की जो जनरेशन है उसके लिए एक पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतने लोगों को आपकी ज़िंदगी में देखते हो, आपको क्या उनको एक आप अपनी बात आप रखना चाहेंगे कि यंगस्टर उसको फॉलो करे और जीवन में उन्नति करे? ऐसा कोई गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं? ऐसी कोई बानी, ऐसी कोई बात आप कहना चाहते हैं? आजकल की यंगर जनरेशन वेरी वाइज है, बड़ी समझदार है एंड दे आर वेरी फुल टोटली इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन फिर भी हमारी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में आता है जब आनंद कारज होता है, आनंद कारज, तो आनंद कारज में हम लावा पढ़ते हैं। लावा भगवान का भजन होता है, उसको लावा बोलते हैं हम।
तो द फर्स्ट थिंग सेज हर पैलड़ी लाओ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी हो। हमारे गुरु जी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ और इसी में विश्वास करता हूँ कि कर्म करना मीन अच्छा काम करना। अगर जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। द सीड यू बो द यू विल गेट दैट फ्रूट ओनली। आम बीजोगे आम होगा, खरबूजा बीजोगे खरबूज होगा। अगर बुरा काम करोगे तो बुरा होगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा। अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो और फल भगवान अपने आप जरूर देगा। मेहनत करो, सादा जीवन जियो, मेहनत करो और भगवान पे भरोसा रखो। दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव मैसेज टू द न्यू जनरेशन। क्या बात है, थैंक यू अंकल। राम सर, हमारे एक सेकंड, हमारे गुरु नानक ने जब उनको कहते हैं एनलाइटनमेंट हुई और उनका हमारे गुरु ग्रंथ साहब, सारा गुरु ग्रंथ साहब का असेंस अगर आप देखो, सारा असेंस देखो, तो वो कहते हैं काम करो, नाम जपो ते वंड के छको मीन इफ यू आर वेल इन गुड इनफ हेल्प अदर्स आल्सो एंड काम करो। इस गुरु नानक ने ये नहीं बोला भक्ति करो, उन्होंने बोला काम करो। काम करो, वंड के छको ते नाम जपो। वंड के छको मीन हेल्प पुअर्स एंड नाम जपो। बाद में लास्ट इज भक्ति, फर्स्ट इज काम, वर्क। काम अच्छा करो, काम करो, मेहनत करो, उसके बाद कमाओ, कमा के अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो एंड इफ यू आर अफोर्डेबल हेल्प द सोसाइटी। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अंकल के लिए, बहुत खूब बोला। फ्यू मोर क्वेश्चंस राम सर, हम क्लोजिंग स्टेटमेंट में आ रहे हैं अभी। गाने का तो आपको बहुत ज़्यादा शौक है, ये पता चला हमें, और पुराने गानों से लगाव भी है। कौन सी आपकी एक फेवरेट मूवी है? एक मूवी जो हिंदी या इंग्लिश, कोई एक फेवरेट मूवी, और वो क्यों पसंद है आपको? मूवीज़ तो सभी हैं, बट इफ़ यू मूवीज़ अगर मेरी पूछो तो Amir Khan movies, I like all Amir Khan movies just because of his performance, his persistence and his perfection. So, जो जीता वही सिकंदर. जो जीता वही सिकंदर. It is all because of a life of a person who's very casual in life, who's taken things very coolly, but then with all the efforts, changes, and the other movie is Guru. अपने जो अभिषेक बच्चन की. Yes. और आपके फेवरेट एक्टर? Favorite actor has been Jackie Shroff. रीजन? पसंद है बस पसंद. उसका कोई रीजन नहीं है. अरे आप, हम भी क्या होता है, कभी हम पूछते हैं हमको कोई पसंद है, रीजन पूछ लेते हैं. कोई बोलेगा इंटेंस एक्टिंग है, कोई बोलेगा लुक्स है. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपके आईक्यू से क्यों पसंद है. फेवरेट एक्ट्रेस एक ऐसे आप मत बताना, बहुत है. नो डिप्लोमेटिक, स्ट्रेट आंसर. क्योंकि पप्पा डिप्लोमेटिक दे सकते हैं, आपको वो हक नहीं है, आपको स्ट्रेट ही बात करना है. माधुरी दीक्षित. एवरग्रीन. चलिए, गुड सर. राम सर, any expansion plan of Neelkanth in future? I'll be straight. Yes. Not diplomatic. I don't want to open my cards yet. Simple thing that लेकिन सर इतने जो लोगों की दुआ है आपके पास. We take things as it comes. Okay. लेकिन अंदर कुछ सोचा हुआ है कि just you want to expansion का कोई मूड है कि आएगा तो करेंगे, क्या है? आएगा तो करेंगे. Rather I would put it there, अगर कर सकेंगे तो करेंगे. Okay. अभी आपने देखा कि बहुत सारे रिटेलर्स के आईपीओ चल रहे हैं, जैसे सेनको आया, कल्याण आया, पीएन गाडगिल आया, बहुत सक्सेसफुल आईपीओ चल रहे हैं अभी. तो आपका भी कोई विचार है आगे आईपीओ में आने का? जब हमने प्राइवेट लिमिटेड किया ना, तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन सबने यही बोला, आईपीओ कब ला रहे हो? यू नो, तो आईपीओ इज नॉट द ओनली
basically it's not the only thing in business. So it is a part of business. Yes, if we are ready for it, maybe sometime maybe. As you told, you will not open your cards. Yes, So maybe. maybe. Yeah, because I feel there's still a lot more to do before getting an IPO. Yeah, so it's not just IPO. IPO is not the only thing, because this is the only business that we know. Correct. Frankly speaking, this is the only business that our family has taught us. So I don't see an exit plan for this. Touchwood, I mean, by the grace of God. So. I think this is your nature straight. Yeah. People, when they hear, they would understand straight. Yeah. So as of now, you feel this business is being with you for generations. Yes. Okay. So Ram sir, now a last and final question. Now your son is in business. What difference you see between today's generation and your generation, where you feel to match it's little difficult, or would you like to guide today's generation what they have, if they are coming to business, what they have to look into this more? It is not necessary to match. I don't expect my son to do things that I have done. It is not that I expect. He can do it also, or it is possible. But we come from a generation wherein we have seen the mix of both. Okay. We have seen our grandparents and seen my parents work, and we've seen the changes also. So basically, right from our generation has done things like even going to the local refinery, melting gold ourselves, sitting with the goldsmith, getting work done, all that stuff. And from unorganized to organized, right? So we have seen all of that. But I don't expect that my son should do what I did. So, but we are open to ideas. Whatever, if he wants to bring some changes, if he wants to do something, whatever it is, we are open to ideas. So don't force the young generation that we have worked like this, so we expect you also to work like this. But yes, keeping in mind a few ethics, yeah, so to follow that, but we are open to ideas, we are open to new platforms, new ventures, whatever. Thank you, Ram sir. Thank you, Uncle. Thank you. A big round of applause to the living legend who have, we had the intense talk with them. We understood how to take the legacy. But today the Mool Mantra, what we understand to develop a great brand is to have an ethics, a moral into the business, and make sure that whatever business you do passionately with lot of force and lot of hard work. And I'm wishing Neelkanth family, I'm wishing you very all the best. I'm sure we'll see all your closed cards open very soon. A big round of applause. Sorry, there's a Q&A. We can take 2 Q&A as you, Ramesh bhai. I think you're intensely listening this all conversation. Borrow your mic. So first of all, a very interesting, knowledgeable and open-hearted conversation. Congratulations to all of you, to Narinder ji, Ramji and you, Chetan bhai, to organize this for us. I have also very fond memories with Neelkanth because my first ring, my first jewelry, rather it was the first silver ring in the pearl, was bought by my mom and Neelkanth. She took me to Neelkanth Avenue Road showroom, sir. I don't know whether you remember, but I remember you were there. तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि इसको वो पर्ल की दो, थोड़ा इसका टेम्परामेंट कूल के लिए गुस्सा कम होगा, तो पहली रिंग आपसे ली थी. उसके बाद जैसे संदीप ने बताया कि आप उनके फर्स्ट कस्टमर थे. आई नो वेदर यू रिमेंबर, आर्ट ऑफ ज्वेलरी मैगजीन जब हमने स्टार्ट की तो उसका फर्स्ट एडवर्टाइज बैक पेज नरिंदर सिंह जी के पास मैं गया तो उन्होंने बोला यस. उस समय हमने ज्वेलरी मैगजीन स्टार्ट तो कर ली, मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड से था, ज्वेलरी फील्ड से नहीं था. तो ये B2C है, B2B है, हमें भी मालूम नहीं था ऑनेस्टली. तो उसको चलते रहते 2-3 साल बाद हमने उसको B2B किया. उसके बाद हमारा और क्लोज रिलेशनशिप हुआ बिकॉज शिवराम जी हुआ करते वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, हमने गोल्ड फेस्टिवल, अक्षय तृतीया बहुत सपोर्ट किया आपने. तो ये मेरी फॉन्ड मेमोरीज है और अभी तो वी आर लाइक वेरी क्लोज एंड थैंक यू. मेरा क्वेश्चन था नरिंदर सिंह जी आपसे सर. तो जब 40 साल पहले आपने बैंगलोर में रिटेल आउटलेट ओपन किया तो आपको आइडिया था कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है और नीलकंठ ब्रांड एक दिन इतना बड़ा होने वाला है? नंबर 1. नंबर 2,
आगे 40 साल, अभी इतना कंपटीशन आ गया है, इतने ज्वेलरी शोरूम्स आ गए हैं, पहले नहीं थे, गोल्ड रेट बढ़ गया है, यंगस्टर्स की प्रेफरेंस डिफरेंट है, मोबाइल फ़ोन चाहिए, हॉलीडे चाहिए, तो आपको आगे 40 साल फ्यूचर कैसा लग रहा है? और जब आपने स्टार्ट किया था यहाँ पहुँचेंगे कि कैसे पहुँचेंगे, आइडिया था? आई होप आई एम क्लियर सर. थैंक यू. Thank you, Sumesh bhai. समय के साथ साथ, मौसम के साथ साथ, समय के साथ साथ सीन चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है, एंड चेंज इज़ लाइफ. चेंज नहीं तो दरिया जो है वो बदबूदार छप्पड़ बन जाता है, और अगर चलता रहे तो वो दरिया एक ना एक दिन समंदर में जाके मिल जाता है. तो चेंज इज़ लाइफ. वी मस्ट बी वेरी रिसेप्टिव टू चेंज. अपने ज़माने के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे वक्त कहता है, जैसे जैसे सिचुएशंस कहती हैं, वैसे वैसे चेंज होते हैं. अब देखिए, आज से पहले, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले संडे वाले दिन पूरा बेंगलोर बंद होता था. आज संडे वाले दिन पूरा बेंगलोर खुला होता है, हर ज्वेलर्स खुला होता है, और सारा दिन चेंज के साथ साथ पीछे जो ज़माना था वो ज़माने के हिसाब से आज जो चेंज है दैट इज़ क्वाइट बट नेचुरल, और चेंज होनी चाहिए. चेंज है तो ज़िंदगी है, और आगे भी जैसा समय होगा, जैसा कस्टमर चाहेगा, जैसा समय की सिचुएशन होगी, जैसा हमें अडॉप्ट करने के लिए जो जो चेंज होना पड़ेगा वो करेंगे. हमें याद है कि हम भी वेरी पर्टिकुलर थे कि हम संडे नहीं खोलेंगे, संडे फैमिली डे. बट many times our customers complained, no, we, our family, we are free, our husband is free, and why don't you open on Sunday? And we started opening on Sundays. Similarly, whatever the time will say, situations will say, accordingly we will change to ourselves. Thank you, Uncle, for your answer. A big round of applause. Coming to the closing ceremony, I would like to thank Narinder Singh ji for sparing a great time, and at the age of 76 we can see how passionate. We have to learn from him that anything you can achieve in your life with your hard work. We have seen what Ram sir sings beautifully, sir. Next time when we have some internal program, we would like to hear you more, because the way you took Alab, the Alab was right to the point. So a big round of applause for Neelkanth, Ram sir. Sir, I would request you to please come on stage, join.
धन्यवाद धन्यवाद अपने आप को